बट कहीं ना कहीं आई डेंट वांट टू, बिकॉज एक रिकॉर्ड मैंने 2018 में कर लिया, फिर मैंने सोचा कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2019 में आई नीड टू हैव दैट रिकॉर्ड, कुछ भी करके आई हैव टू अटेम्प्ट इट इन 2019, and I set that second world record for solving 176 puzzles while riding a bicycle. आप वो एक बार आप problem solving समझ गए तो you need to put it in your actual life, and that is when you really accomplish something, कि आप कहीं ना कहीं उसके uses और जो ट्रिक्स आपने वहां पे यूज किए वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चेंजेस ला रही है. So I think that is the important part in any sport. Hello, Chinmay. First of all, I want to thank you for bringing up your time and patience on a podcast. And the first thing I want to ask you, how does it feel after making 4 Guinness Book of World Records? Yeah, firstly, I'd like to say that I am grateful for you for giving, for you to give me this opportunity to speak. And after 4 Guinness World Records, it just feels like it felt when I did not have a record. I mean, it doesn't feel any different. It's all the same. है ना, because अब तो आदत सी हो गई है for making all these Limca Book of Records, and it's just going up in a like a trail. Can you tell us something about your journey? ये start कहाँ से हुआ? What was your first instinct with this? Yeah. Sure. मेरे स्कूल डेज में जब कोई मुझसे कहता कि अरे रूबिक्स क्यूब का रियल एग्जिस्ट करता है, तो मुझे शायद ही कुछ क्लू ना होता कि रूबिक्स क्यूब क्या है. तो जैसे ही कुछ जूनियर कॉलेज का फर्स्ट ईयर था मेरा, एंड तभी मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो क्यूब बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाता था, एक रूबिक्स क्यूब. एंड तभी मैंने नोटिस किया कि ओके, रूबिक्स क्यूब एक्चुअली कोई सॉल्व कर सकता है. ऐसे नहीं कि जस्ट स्क्रैम्बल किया है एंड पीपल आर ट्राइंग, सॉल्व भी होता है वो. तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे कि कैसे एग्जैक्टली मैं इसको क्रैक कर सकूं, एंड कैसे इवेंचुअली मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकूं. काफी ट्यूटोरियल्स देखे और कुछ में काफी हेल्प मिली, कुछ में वापस में स्क्वायर वन पे आ गया क्योंकि मैंने कुछ गलत मूव्स किए थे. बट इवेंचुअली जब मैं सीखा तो उसके तब दिस इज इजी, हम लोग बस कॉम्प्लिकेट कर रहे थे चीजों को, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड दिस इज समथिंग जो हर कोई कर सकता है. And did you got the support? जो generally support चाहिए होता है कि yeah, you are doing up your work and it's good. The support has always been there. I'm very grateful to my mom and dad for this, because first year junior college mein the other parents really wanted their kid to just focus on the studies, कि बस पढ़ाई करो, college attend करो, classes attend करो, grades अच्छे आने चाहिए. My parents were not like that. Of course they wanted good grades, but they also wanted to make sure कि I have the best college time, कि कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ, कुछ लोगों को मिल रहा हूँ. So they wanted me to take it slow. And it acts like a boon when your parents are understanding your creative aspect of the work, and of course. ये जो balance होता है ना कि between studies and that your creative stuff जो भी आप कर रहे हो, ये balance कहाँ से how did you maintain that? Firstly, जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत इम्बैलेंस हुआ, वो पूरा एक ऐसा साइक्लोन की तरह आ गया कि अब मेरा पूरी तरह से अटेंशन क्यूबिंग पे था, और रूबिक्स क्यूब सीखा, पिरामिड सीखा, मिरर क्यूब, और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि कहीं ना कहीं पीछे मेरा स्टडीज पीछे जा रहा था, मेरे ग्रेड्स कम हो रहे थे. तो दैट इज द टाइम आई थिंक मैंने रियलाइज किया कि दो मैं ये कर रहा हूँ, आई ऑलवेज नीड टू हैव अ बैकअप प्लान, कि ऐसा ना हो कि अगर इसमें कुछ ना हो पाया तो वो ग्रेड्स भी खराब है. तो दोनों तरफ से फंस जाता. तो फिर सोचा कि आई डिवोट माय मंडे टू फ्राइडे टू स्टडीज, टू वर्क, एवरीथिंग लाइक दैट, एंड वीकेंड सैटरडे संडे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस. अगर टूर्नामेंट्स के लिए प्रेपरेशन हो या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए आइडियाज स्क्रैच से स्टार्ट करके पूरा एंड तक प्लान आउट करना, तो इसके लिए वीकेंड्स डिवोटेड थे मेरे. अच्छा, और जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहला आपने बनाया, व्हाट वाज इट अबाउट, और उसके बाद हाउ द जर्नी वेंट for making these couple of world records? तो पहले तो जब मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड हुआ था मेरा क्यूब ब्लाइंडफोल्ड सॉल्व करने के लिए, एंड तभी मुझे जेन्युइनली लगा नहीं था कि मैं कभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकूं. इंडिया के नाम पे एक रिकॉर्ड मैंने इंडिया में किया था, दैट वाज वेरी नाइस, इट वाज अ नेशनल रिकॉर्ड. एंड तभी कहीं ना कहीं मुझे इतना सारा मोटिवेशन मिला मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली से
कि व्हाई नॉट ट्राई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और तभी तो मैंने ऐसे फेसबुक पे रिप्लाई देते यूजुअली कि श्योर लेट्स डू इट, तो लिखा। एंड कहीं ना कहीं वो प्लान हो नहीं रहा था कि कब करना है, क्या करना है, आइडियाज नहीं आ रहे थे। तो जब मैं स्विमिंग भी सीख रहा था तो आई थॉट ओ वेट, शायद अभी वो राइट टाइम है जब मैं दो एक्टिविटीज को शायद मर्ज कर सकूं, कुछ नया कर सकूं। बिकॉज जब आप गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का वेबसाइट देखोगे, वहां पे उनको एक चैलेंज भी चाहिए एंड दे वांट सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। Yeah. Yes, I तो saw मैंने that. सोचा कि ओके लेट्स मर्ज क्यूबिंग एंड अंडर वाटर। तो मैंने एप्लीकेशन उनको भेजा कि कैन वी डू इट, लाइक सपोजिंगली मैं अंडर वाटर रहूंगा, अपना ब्रेथ होल्ड करूंगा एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पिरामिड सॉल्व कर सकूंगा। एंड एप्लीकेशन रिव्यू होने को इट यूजुअली टेक्स 3 months। तो मैंने ऑलरेडी अपना प्रैक्टिस चालू कर दी, ये बिना सोचे कि शायद एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या कुछ हो। तो मैंने फुल ऑन प्लानिंग चालू कर दिया। एंड आई थिंक आफ्टर अ मंथ और टू आई वाज लाइक ओ नाइस, मैं अभी 3 कर सकता हूँ अंडर वाटर, तो शायद मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और तभी मुझे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड से ईमेल है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है एंड द टारगेट टू बिट इज 4 क्यूब्स, कि आपको Okay. 4 से ज्यादा करने। ओके नाउ आई एम ऑलरेडी ट्रेन सो फार, मुझे मैंने बहुत सारा अपना टाइम डेडिकेट कर दिया है, तो माइट एज विल प्रैक्टिस मोर। एंड जब मेरा प्रैक्टिस सेशंस इंप्रूव होने लगे, जब मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होने लगा अपने, तभी मुझे मेरे कॉलेज से भी काफी सपोर्ट मिला कि मैं लेक्चर्स भी लास्ट में ऐसा होता था कि आई वुड टेल द टीचर्स दैट आई हैव सम प्लान्स, आई हैव टू डू दिस रिकॉर्ड एंड आई डोंट हैव डेज इन हैंड, तो मुझे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करने जाना है। दे वुड जस्ट लीव मी अर्ली फ्रॉम कॉलेज, बिना अटेंडेंस का सोचे कि शायद हो ना हो। दे आर वेरी सपोर्टिव। तो जैसे ही मैं पूल पे जाता था, प्रैक्टिस करता था, आई थिंक रफली एक 3-4 months में आई कुड सॉल्व 5 एंड आई वाज लाइक ओके आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड। बट ऐसा नहीं हो कि कल फटाक से जल्दी से मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ दूं। आई वांटेड टू सेट अ रिकॉर्ड बट एटलीस्ट थोड़े टाइम तक टिके रहे। तो आई प्रैक्टिस रियली हार्ड एंड 5 to 6 months ऑफ प्रैक्टिस के बाद आई अटेम्प्टेड द रिकॉर्ड एंड सॉल्व 9 pyramid puzzles holding my breath Huge. Like for 1 minute it's 48 huge. seconds. Yeah. So and the other records going? Then after the first record, I attempted a second record for solving most number of pyramids while riding a bicycle. तो वापस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने टारगेट दिया टू सॉल्व 111 puzzles एंड आई वाज लाइक ओके विल अगेन ट्रेन हार्ड फॉर इट। एंड तभी खाली इतना प्रॉब्लम हो गया था कि इट वाज अ रेनी सीजन, तो प्रैक्टिस उतना मुझे डिफिकल्टीज आने लगा। आई कुड हैव जस्ट वेटेड थोड़े टाइम के लिए, बट कहीं ना कहीं आई डिडंट वांट टू, बिकॉज एक रिकॉर्ड मैंने 2018 में कर लिया, फिर मैंने सोचा कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2019 में आई नीड टू हैव दैट रिकॉर्ड, कुछ भी करके आई हैव टू अटेम्प्ट इट इन 2019 and I set that second world record for solving 176 puzzles while riding a bicycle. 176 puzzles while riding a bicycle. और कितना टाइम लगा इसको करने में? 1 hour 7 minutes without touching my feet to the ground. Like I'm just imagining how you do that. It's like very commendable. And then वो like एक skydiving वाला भी था, and it's my personal favorite. I was just very it's astonishing and it's like thought provoking कि अरे यार हवा के अंदर हो रहा है सब कुछ। और आई थिंक इवन इन अ कंट्री अलाउड भी नहीं है कि आप कुछ ले जा पाओ। Yes, you're very right. I am so happy that you do this, because जब आप explain करने जाते हो ना कि ये allowed नहीं है, तो people be like या तो ये stories बना रहा है या इसे actually बाहर जाके करना था। But I am happy you know it कि यूजुअली आप स्काईडाइव के लिए जाते हो, ऑब्जेक्ट्स ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कूद रहे हो और आपके हाथ से वो ऑब्जेक्ट स्लिप हो गया, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस द ऑब्जेक्ट माइट हिट समबडी ऑन द ग्राउंड, और वो डैमेज इज समथिंग यू कैन नॉट टेक गारंटी फॉर। वो बहुत सीवियर होता है क्योंकि एक हाइट से गिर रहा है एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ करेक्ट। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे रैंडमली कोई रास्ते पे चले, ऊपर देखे और सर पे लगे, तो दैट वुड बी वेरी फेटल। तो मैंने पहले तो इंडिया में ट्राई किया था रिकॉर्ड करने के लिए। तो इंडिया में मुझे ज्यादा जगह से एक जगह थी जहाँ पे परमिशन नहीं मिली ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड जगह थी जहाँ पे उनका इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं था एंड में, एंड काफी सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। फिर मैंने इतने सारे कंट्रीज में ईमेल किया, आई सेंट ईमेल टू स्काईडाइव दुबई, उन्होंने बोला कि नहीं, नो ऑब्जेक्ट्स, नॉट इवन योर रिंग। स्काईडाइव बैंकॉक, they did not allow. I tried Spain, Pattaya, and finally Pattaya they were like, okay, let's do this. We can plan out, but we'll have to make sure कि एक ही attempt हम लोग दे रहे हैं आपको। We cannot keep giving you multiple attempts क्योंकि हम भी उतना रिस्क ले रहे हैं। उनके वहां पे भी किसी ने पहले एक ऑब्जेक्ट के साथ जंप नहीं किए, तो I was very dedicated, very happy.
and I made a plan कि कैसे कब जाना है, and due to COVID restrictions उधर जाके भी क्वारंटीन होना था, तो कैसे सब प्लान आउट ऐसे चालू था जहाँ पे अगर एक भी कुछ टाइम टू टाइम नहीं होता तो आई थिंक आज मेरे नाम पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ना होता. And like जो वीडियो मैंने देखा था while you were solving that cube, I was like, is it even possible to do that? And like after, like it was very, very like unimaginable. Thank you Do so that. much. What And happens, no, since the puzzle is pyramid in shape, so when I jumped off the plane also, हवा की वजह से वो turn होने लगा. Like ऊपर का जो point है, it just kept spinning. So I could have solved it way quicker, but because वो हवा का force इतना था, वो खुद से 3 बार scratch pressure आ रहा होगा उस टाइम. और वो देखने में भी प्रॉब्लम होती है जब मुंह के ऊपर लाइक एक पूरी वेव आ रही है हवा की एंड यू आर सॉल्विंग दैट. उसमें टाइम कितना लगा आपको? If I'm not wrong, 24 seconds. 24 seconds is not a lot, you know. Yes. अगर मैं अभी सॉल्व But करने then बैठूं, I know it will I take me days to solve the pyramid cube because मुझे नहीं आता. मैं इतना ज्यादा डरा था इस बात पे क्योंकि टारगेट 30 सेकंड्स का था कि 30 सेकंड्स के पहले विदाउट द पैराशूट ओपनिंग और फ्री फॉल में हो जाना चाहिए. अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाते हो या 24 सेकंड्स भी लगा रहे हो लेकिन पैराशूट ओपन हो रहा है आपका जल्दी या जो भी हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो लैंड होने के बाद जब तक मैंने फुटेज नहीं देखा मुझे भी नहीं पता था कि 24 सेकंड में कर दिया हम लोग ने. So it was very scary knowing कि oh you're going to land, you solved it, but what if it is taken more time? 30 seconds से ज्यादा रहा तो मुझे तो सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं दे रहे हैं. तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत डर था. Like knowing कि अरे ये तो हो गया. Oh, you won't believe how happy Guinness World Records were. Mera, if you want to like speed up your application for review, they do charge a heavy amount. They charge like $1,000 or something like that. Yeah. And I sent them an email with the video and everything, and I'm like, see, I've attempted this, and I went to Thailand specifically for this one record, and they were so happy. They've posted it on the website within the next 5 or 6 days of attempt. And this was very surprising. It takes 3 months, 4 months for them to check it. But एक week में तो कहीं ना कहीं I think even they were happy that such kind of records are now existing, where people are giving 100% of their effort, specific just for the record. And like you act as an inspiration for a lot of cubic solvers कि अच्छा हाँ ये सब भी possible हो सकता है, because in our country we don't open up dimensions to things. And like when we see people like you, we get inspired. So do you think India के अंदर there is some loss of this creative art, और कहीं India misses out somewhere? I think अभी at this very moment speed cubers बहुत सारे हैं इंडिया में, और बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स में है जो इतने ज्यादा लोगों को पता नहीं है. जैसे भी स्पीड क्यूबिंग फॉर इंस्टेंस, ये अभी लोगों को समझ आ रहा है कि दिस इज अ स्पोर्ट एंड दिस एग्जिस्ट. अगर आप 5 साल पहले का बात करो, इट वाज जस्ट अ टॉय लाइंग इन समबडीज कबर्ड. नाउ इट हैज बिकम अ टूर्नामेंट हैपनिंग एवरीवेयर. सो आई थिंक इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी नोज अबाउट द स्पोर्ट. मतलब अभी तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट मेनी आर स्टिल अनअवेयर. But now I'm happy seeing that people have put their thoughts into it. और the only thing I think कुछ ना कुछ रहता है ना कि लोग सोचते हैं कि अगर आप क्यूबिंग कर रहे हो फॉर इंस्टेंस तो आप सिर्फ आपको you have to be the fastest. It is not necessary. बिल्कुल. Solving the cube is important. क्योंकि आप वो एक बार आप प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ गए तो you need to put it in your actual life. And that is when you really accomplish something कि आप कहीं ना कहीं उसके यूजेस और जो ट्रिक्स आपने वहां पे यूज किए वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चेंजेस ला रही है. So I think that is the important part in any sport. और like there's a loss of faith कि हाँ हम इस पे विश्वास कर सकते हैं इंडिया के अंदर. Whenever we are trying to attempt something, वो पहले ये बोलेंगे अरे यार how can we keep a faith कि कर ही लोगे. और if you would have been able to do that skydiving in India, so Indians will like it's obvious that they would have been proud, और अभी भी proud है, but as a representation when you're doing in your country, there's another thing which fills you. You have no clue how many portfolios I had made, how many places I visited only to get permissions to do it in our country. And every portfolio had one line, please let me make it happen on our soil, our Indian soil. Yeah, I'm getting that emotion. I'm getting that emotion. Yeah, so I was like, अगर करना है
I want to wave that Indian flag, so why not our country? Why do I have to go somewhere else to just wave it? But then eventually I thought, okay, chalo, whatever happens for good. अगर दूसरे country में भी जाके आप आपका flag लेके खड़े हो, तो you feel very proud in that. कि चलो, we are doing something that will bring records on our country's name. So that feeling is very beautiful. And like about the fourth record you made? Yeah. So actually, the fourth record is the third record. As in, I attempted the third record first, and then the fourth, but the third one took the regular process, 3 months to get verified and everything. I was apparently doing a show for Reliance in Goa, and उन्होंने मुझे एक दिन पहले बुलाया था for the meeting कि आप क्या करने वाले हो, कैसे set करने वाले हो, and everything. And कहीं ना कहीं मेरे back of the mind, I don't know why, but records चलते रहते कि इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं creative. तो जैसे ही मेरा meeting खत्म हुआ, and I think it was 3 o'clock in the afternoon. I said, okay, am I free for the day? अगर मेरा काम, I'm sorry, there are dogs barking. So I said, okay, अगर मेरा काम हो चुका है, तो am I allowed to like go out and explore the place? They're like, sure. I contacted a bungee jumping group in Goa. I got in touch with the person who, leads that place. और फटाक से मैंने एक व्हीकल रेंट पे लिया और निकल गया अपने रास्ते रिकॉर्ड करने के लिए. और जब रास्ते में था तो बस इतना मेरे माइंड में था कि अब जा रहे हैं, रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं वापस, बस टाइम इतना जल्दी मैं वहां पे पहुंच जाऊं कि सनसेट ना हो, ताकि वो वीडियो में क्लियर दिखे, ताकि वो एविडेंस इज करेक्ट. बिकॉज एक और दिन मेरे पास है ही नहीं हाथ में. तो वहां पे गया एंड ही वाज वेरी हैप्पी, द मैन देयर इन चार्ज. ही सेड, ओह वाओ, वी विल डू इट, बट हाउ अबाउट यू प्रैक्टिस नाउ? क्योंकि किसी ने कभी किया ही नहीं है बंजी में, पूरे वर्ल्ड में किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है. बिकॉज बंजी का जब फोर्स रुकता है तो इवेंचुअली वो ऑब्जेक्ट छूटने का बहुत चांस है. Like, why not? अभी के लिए आप प्रैक्टिस करो and come after 3-4 months back to Goa and then you attempt. I'm like, नहीं, देखो, I am risking my life for bungee jump, so I don't know. मुझे तो करना ही करना है. Nobody can stop me. Right. So like the second time, I never know if second time comes or not, but I need to take the cube along. And he said, okay, come on now, it's your wish, so let's make it happen. And वो भी जब रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया तो बहुत व्हाट यू से एक इनर फीलिंग आया कि ओह वाओ, यू जस्ट केम फॉर सम अदर रीजन एक जगह पे एंड देन यू गो अवे एंड विद अ सर्टिफिकेट. सो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड्स करते रहना मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहा है. So like what is the root of a madness for this cube? क्योंकि you want to do the stuff जो कोई नहीं, like कोई सोचता भी नहीं करने का, and like you think I will make it possible. So like where did that instinct come from? See, there is I won't name it, but there is a a committee that organizes specific awards. Okay. And I was eligible for the award. I spoke to them और उन्होंने मुझे बोला कि speed cubing is not a sport in India, so that will not be counted. तो वो चीज मुझे हिट किया कि ओ ओके, स्पीड क्यूबिंग स्पोर्ट नहीं है ना, तो दूसरे स्पोर्ट्स के साथ मैं स्पीड क्यूबिंग मर्ज करूंगा. आई विल नॉट लीव क्यूबिंग फॉर द अवार्ड, but I will try to bring speed cubing in everything. If you think adventure sports, oh skydive, okay skydive में कर लिया. You think swimming, okay underwater कर लिया. You think bicycle चलाना, उस पे कर लिया. तो I just want, तभी से I think वो चीज चालू हो गया कि speed cubing को if you don't consider a sport, why not merge it with other sports? The best way it could get attention as a sport. तो तब से I think it started with the madness. वो एक trigger point था मेरी life में कि okay, you don't consider this to be a sport, I will make it happen one day. And like that is something which is needed. कोई भी artist के अंदर if he has madness, तो वो उसको आके लागे ही रहेगा कि देखो हाँ मैं कर सकता हूँ, और अगर you're not giving me a chance, I will like crave my own way into the stuff. Right. Like which was the hardest record? Parachute वाला या सबसे डिफिकल्ट आई थिंक मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पैराशूट वाला ही, द स्काई डाइव वन, बिकॉज दैट हैड मल्टीपल व्हाट यू से थॉट्स इन योर माइंड, जो हर बार बोलते कि शायद दिस माइट नॉट एंड अप एज यू वांटेड टू. कि एक चीज भी अगर इधर से उधर हो गया, इट माइट लीड टू समथिंग वेरी सीवियर. ऑल्सो एक अटेम्प्ट में वो करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज now considering
underwater sport, yes, cycling. I had time to practice. जब तक मैं तैयार नहीं हूँ, I didn't have to attempt the record. इधर मैंने एक बार डेट सेट कर लिया, there is nothing in my hand कि चलो मैं वापस कभी करूँगा. So I think वही सबसे difficult था मेरे लिए. And like, how do you face your fears? अगर हमें भी if somebody very young is asking you कि इतना तो इसके अंदर डर लगता, like obvious सी बात है कि आप कूद रहे हो और आपके हाथ में एक क्यूब है और आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो like you feel like you are somewhere broken. और जब बंजी जंपिंग कर रहे हो या ये स्पोर्ट अकेले में ही करना without the cube, वही बहुत लोगों के लिए impossible है. And then bringing some other stuff into the act, like how do you face your fears then? See, I'll tell you, I am a filmy person sometimes. I go with a lot of Bollywood movies and whatnot, but like the old ones, the gold ones. Okay. So skydive के पहले मेरे दिमाग में जैसे thought था कि see, the worst thing that could happen is death. Because that you just can't get that thing out of your mind कि when you're signing the paper, no, कि these guys are not responsible if anything goes wrong. So you know what can go wrong. और आपका दिमाग जो है ना, वो पहले तो सब नेगेटिव बातें सोचने लगता है कि this might happen and what not. So I think the most one thing we are all feared of is death somehow. Like that is one thing we don't want to get into because there's so much to explore in life. But again, since a typical Bollywood guy, so there is this one beautiful movie called Anand from 1971. Okay. Yeah. Okay. I've heard about it. And it had this one pretty amazing dialogue which says, "Babu Moshe, zindagi badi honi chahiye, lambi nahi. Agar maut ke dar se जीना छोड़ दिया, तो फिर मौत का क्या काम?" And it also says something like, जब तक जिंदा हो तब तक मरा नहीं, और मर गया तो साला मैं ही नहीं. So that I think hit me so hard. That touched me so deep. So I think that is one movie that I keep watching so many times because whenever I feel low, I just start feeling happy about life. I start feeling how grateful I am to everything that I already have. And then you're not scared of anything. You're like, okay, the worst thing that could happen is this, and I'm ready to face that also. So beach ka cheeze to I can definitely handle. And as an artist, you like, I call you an artist. You are doing up some crazy amazing stuff जो लोग सोचते भी नहीं होंगे करने का. And when you are saying कि मुझे अब तो डेथ से भी डरने लगता और मैं मेरी आर्ट के लिए उससे भी लड़ जाऊंगा. So you are at some other like esoteric level from which you're speaking to. तो like कुछ movies आप recommend कर दो जो like जो आपने देखी है and you want people to watch them. Okay, there is one movie that is very impactful. That is called Sheep of Thesis. Sheep of Thesis. I don't know if you've seen it. It's a Bollywood movie, released somewhere around 2011 types, which is available on YouTube. Okay. But again, very beautiful. It will throw immense light on yourself, and you'll start just thinking of everything from a different perspective. Okay. So any movie that is making me think about my existence and what do I do and how the world works. So basically, I just like to watch those movies more than the cringe ones. और कोई? Yeah, just like I told you, Anand. That works. Also, if you're an adventurous soul and you have that plan कि you want to see the world, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा is one of those movies where बिल्कुल that is I think that is one movie जहाँ पे मुझे skydiving से प्यार हो गया कि ये चीज तो करनी है मुझे. And the first time I saw that movie, I was with my friends, और हम भी तीन ही थे, वो भी तीन ही थे, so I was able to connect with that movie. और it's really amazing. I don't know, but everybody has one group जिसमें तीन दोस्त होते. Everyone. बिल्कुल. Trust me. I can relate with that. And like, so you are an adventurous person then. Yeah. So would you tell us something about your adventures and all? See, my end goal, to be honest, is if you say cubing and everything, yes, I love to promote cubing as much as I can. And I like to merge it with activities. But being an adventurous soul, I want to explore the world more. There are probably so many things we can do that we might not know of अभी के लिए, क्योंकि हमने कभी explore ही नहीं किए कुछ जगह. जैसे, for instance, there are many countries who have their own culture, and maybe you would like to be a part of it someday, only to see how it feels.
So that is my end goal. I want to see all the countries. Now my bucket list is I want to visit all 7 continents. So I've seen 2, 5 more to go. So somewhere I think 25-30% down the line at the moment. But oh my God, I have been so in love with penguins, and I really want to visit Antarctica someday. Acha, Yes. okay. You wanna visit Antarctica then, or Yes. to see them live with them? And then because you're that is the natural habitat. No, now if you say you'll see penguins in Mumbai, that is a different thing. But seeing them in the natural habitat is something just and then you're gonna make a world records with the penguins too. You never know. You never know. You can do anything, you know. So उसका तो like ये तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी अगर वहां पे जाके बनाओगे. You have done much more stuff than that. So like I'm just giving you a suggestion. You should do something like that. It will be very. Oh yeah, for sure. है ना? And that is not a bad idea. I'm definitely writing it down somewhere. And like what other records you have in mind which you want to do? I do have 2 records in mind कि चलो I want to narrow it down कि पहले कौन सा करना है या कैसे अपना time devote करना है. But I won't say कि वो record क्या होने वाला है because ऐसा थोड़ा वो surprise factor रखना चाहता हूँ उसमें. But definitely, again, it's going to be merging with some other adventure that I've not tried before, some other thing that I've never tried. Or like when it's coming, we can expect not it in even this year. Sure, but no, probably since it's already August, I want it to happen very nicely, and I want to set it with a proper plan. So I think it will happen in 2023 only now. Something much more huge than the humanity can think. Chinmay is going to do that. Not like something beyond what you can think. But it is a sport that is not known that much in India, though it is there in India. It exists. I'm going to attempt it right in India, but it is not known to many people. Probably people might start either solving Rubik's Cube or at least go and try that sport out to see how that feeling is. I'm waiting. And like you're also a Mosaic artist, you know. I just saw some of your videos and photos where you're doing that Mosaic art. So yeah. Did you connect it with Cube or it was something separate? Oh yeah, it was. What happened earlier was I do work with a couple of friends from the speed cubing background. Okay, so whenever there's an event or something, we come together, decide whose mosaic are we going to make, and accordingly we make it on Rubik's cubes. Achha, okay. So we use like 1,000, 2,000 Rubik's cube. We sit for hours and then we assemble it all together to see the end result. But what happens though, the Rubik's cubes are expensive if you want to buy like in thousands. Okay. तो उतना बजट तो सबके पास नहीं होता कि अरे अभी आपको एक मोज़ाइक गिफ्ट करना है या कुछ बनाना है. And what if you don't have a cube? तो मैंने सोचा why not just make a graph जैसा पेपर with the size जो मुझे sketching के लिए easy पड़ेगा. और फिर वो पेपर पे करते instead of Rubik's cube क्योंकि I could even print it via the computer बना के, but then it doesn't give that feel to it. वो एक effort जो आप दे रहे हो वो उस पे नहीं आ पाएगा जो भी आप print ले रहे हो. So I make sure कि I have my personal touch to it. I feel little more connected to it. So instead of Rubik's cube, I try to make it on paper. But whenever there are events or something, when I have multiple Rubik's cube, so I make it with Rubik's cube. मुझे मेरा मैथ्स का रजिस्टर याद आ गया जिसमें ऐसे छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, and you color it down or it also acts like this. Yes. And like abhi in our country, like we are developing, our ideas are getting like much more richer day by day, but still young जो भी youngsters है उनमें art को लेके उनके parents के साथ quarrels होती रहती है. If we want to do this, उनके parents बोलेंगे नहीं focus on your studies. Yeah. So what notion do you have for the people जिनको अपना art follow करना है but still they have some struggle behind their work? See, to be honest, if you want to follow not just art but anything at all, and people are not supportive, at times, okay, this is not advisable, but at times you need not even tell them that you've started. For instance, you like painting and you are a college going kid, might as well go to college and sit after the college lectures are over and then try to finish your painting there. If your parents are not supportive at home, probably try doing it outside. I mean, though it is beneficial or what we say a plus point when everyone around is supportive, but if not, I don't think that only because others were not supportive that you stopped being creative.
let the creativity just keep flowing in whatever you do and wherever you are. You don't need a specific place for it. It can happen everywhere and anywhere. So like, any advice you have as in cube artist, as in mosaic artist, for the people who want to just take up this as something as very important as in their life? Ki haan, hame bhi, we want to do this stuff. We are inspired by Chinmay, or haan, we also think ki hum bhi kuch kar sakte hain. See, supposingly you want to be a mosaic artist, it is very necessary that if you're doing it with Rubik's Cube, ya to aapke paas achhe funds ho, you need a sponsor, or maybe your savings, or your parents ka thoda help, something like that. If you want to buy multiple Rubik's Cube to get started. And once you, before even buying Rubik's Cube, I would rather advise ki if you want to give it a try, ki kaise hota hai, you can also rent it out sometimes. There are multiple stores jahan pe aap Rubik's Cubes multiple aisa bulk mein mosaic ke liye rent kar sakte ho. Okay. Ki supposingly now you want to try a mosaic and you want to do it on a Rubik's Cube by yourself, and you want to maybe make it for one of your family members' wedding or something like that. You want to display your artwork there, but एक बार आपने display कर दिया, फिर आप क्या करोगे उस artwork का? Putting so much of investment into it, putting so much of time into it, फिर तो I don't think you'll be using it if you're doing some other work professionally, unless you're doing it for profession, like with an angle of just earning with that art and making a career into it. So it is very advisable to start renting Rubik's Cube rather than just buying it, because it will help save some money, and also it will show if you're really interested into it. Okay. क्योंकि ऐसे होता है ना कई बार कि हम कुछ ले आते हैं, we do practice, और फिर थोड़े टाइम में we just give it up, फिर पता नहीं वो कौन से कोने में पड़ा है घर पे. So it is always necessary कि आप पहले देखो if you're liking it or not, and if you're liking it and specific आपको एक career बनाना है उस पे, go for it. This is like the best time you could get started with it, because India में hardly Rubik's Cube mosaics events में use हो रही है. Yeah. This is the best time. कि अभी Rubik's Cube थोड़ा hit हो रहा है, बहुत सारे activities hit हो रहे हैं, and people are now started to focus something that is not in the curriculum. So this is the best time to get started. And like now throughout the session, it was so good that it kept me electrified, and I'm thankful to you, Chinmay, that you came to our podcast, you came to our project and added up your contribution, your wisdom and your experiences. And I'm sure like most of the viewers will get electrified, will get like truly inspired and motivated by your wisdom. Thank you, Chinmay. I hope so too. And it was so amazing talking to you. Even I feel so good right now. And it was really, really wonderful sharing my experiences with you. Thank you.